Now those have joined for this lecture. Ayesha Mujawar. Yes, sir. हा, तुम्हाला काल मी जे शिकवलं ते समजलं का हो सगळं? हो सर. रिझॉल्युशन ते सगळं समजलं ना? हा. ओके. सोमनाथ. सोमनाथ सोमनाथ शिंदे. अभिजित वाघमोडे. अभिजित. कुठले सर? शेट्टर सर केबिन मध्ये गेले. तिथे विचाराय का मग? Those who have joined to this session, to this lecture, please draw this diagram and find out the resultant of these forces. Find out the resultant of these many forces. 4 forces I have shown here. 4 forces मैंने इधर दिखाए हैं. तो ये 4 forces का resolution आपको करके उसका resultant find out करना है. And theta. Yesterday we have solved one problem. These all forces in previous example they were concurrent, means एक जगह पे आ रहे थे. ऐसा कोई इशू नहीं है कि सभी फोर्सेस एक जगह ही आना चाहिए. Am I right or wrong? सभी फोर्सेस एक ही जगह आना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है. If it is going to come, it's okay. If it is not going to come, then also it is okay. Clear? So try to resolve this problem. Try to do the resolution of these forces and find out a resultant. Find out a resultant. Only 32 students joined. Those who have joined for this session, please try to complete this problem. Find out the resultant. Or write down the somewhere a question. Find out the resultant and direction of a resultant in the given problem. हॅलो सर. हाँ बोला की. सर क्वेश्चन अजून एकदा सांगता का? Question. Find out the resultant. Find out the resultant and direction of a resultant
direction of a resultant in the given diagram. In the given diagram. Okay, now resolve this. Two forces are completely vertical. 80 Newton and 60 Newton are completely vertical. 40 Newton and 50 Newton are inclined. 40 Newton and 50 Newton are inclined forces. But in both cases, they have given angle with a horizontal. So it's mean that the horizontal component is a cos and vertical component is a sine. If they have not given with a horizontal angle, if they have not given with a horizontal, then we have to convert angle from vertical to horizontal. So we have required to deduct that. Okay. So here 30-degree angle is given with a horizontal line and 40-degree angle is given with a horizontal line. Clear? So 40 Newton horizontal component is a 40 cos 30 and 40 sin 30. And 50 Newton horizontal component is 50 cos 40 and 50 sin 40. Now there is a, I have just given orally, but here required to consider साइन कन्वेंशन also. आपको साइन कन्वेंशन भी आपको देखना है इसके. So you can check it साइन कन्वेंशन and do summation of f of x, summation of f of y, then find out resultant r is equal to root summation of f of x square plus summation of f of y square, and then final tan theta is equal to summation of f of y upon summation of f of x. Clear? Now try to do this. Yesterday we have solved the same problem, but in yesterday's problem, the forces were concurrent. Concurrent का meaning सभी forces एक जगह पे इकट्ठा होना, उसको concurrent बोलते हैं. These forces are non-concurrent forces. These forces are non-concurrent forces. In yesterday's lecture, we seen a concurrent forces. In yesterday's lecture, we seen a concurrent forces. In today's problem, all the forces are non-concurrent. Non-concurrent meaning they are not going to meet at the same point. They are not going to meet at the same point. These type of forces are called as a non-concurrent forces. Okay, I will not give the resolution of this. Remember, yesterday I have explained very nicely. In a detail, I have explained. So I am going to ask last answer summation. What is the answer of summation of f of x? What is the answer of summation of f of y? What is the r value and what is the theta? That I am going to ask. Okay, this problem again I will explain to you. So again, if you are having any issues related to solving, please let me know now itself. Now 40 Newton के दो component आएंगे, एक horizontal component and vertical component. I will draw a dotted line here, one dotted line, one vertical horizontal line. The arrow should be in this way. All the arrows should be move away from the center. ये सभी arrows 1, 2 और 3 उनकी दिशा सेम डायरेक्शन से होनी चाहिए.
आउटवर्ड होनी चाहिए. Okay. So this is the horizontal and this is the vertical component. The direction is in this way, so it is minus 40 cos 30. And this is also in a downward direction, so it is minus 40 sin 30. Clear? Minus 40 cos 30. Horizontal component is a cos, vertical component is a sin. Now this is a completely vertical, so it is a minus 80. This is a completely upward, this is a positive 60. And this is the last one. Now the arrow you can check it here. It is moving towards this side. So arrow draw करते वक्त इधर आपको बहुत precaution लेना पड़ेगा. The arrow should be in this way. Arrow should be in this way. Check it. तीनों की भी दिशा सेम होनी चाहिए. ये देख लीजिए, ये इधर जा रहा है तो ये भी उधर, वो ये भी उधर. Horizontal component should be away. This vertical component should be away. This all three arrows should have outward direction. Are you understanding or not? So इसका horizontal component 50 cos 40 and इसका vertical component minus 50 sin 40. Minus 50 sin 40. 50 cos 40 and minus 50 sin 40. Anyone is having issue related to the resolution now? किसी को resolution के बारे में कोई issue है क्या? If not, we'll do a next thing. We'll do a summation of f of x. We'll do summation of f of x. Who is going to tell that how many horizontal forces are there? 3.6. There are two forces. There are two forces, minus 40 cos 30 and 50 cos 40. I'll write minus 40 cos 30 plus 50 cos 40. Now do the summation of f of x. You have a calculator with you. Find out the answer now. Find out the answer. Sir, 3.66. 3.66. 3.66. Okay, 3.66 Newton. Clear? Similarly, summation of f of y. In a summation of f of y, four forces are there. 1, 2, 3, and 4. So I have to consider all these forces. So summation of f of y is equal to minus 40 sin 30 minus 80 plus 60 and minus 50 sin 40. Find out the answer of this. 72.13 Newton. Minus 72. Minus 70. 70. Yes, sir, minus. Correct. Minus 72.13 Newton. Clear? Now, I know summation of f of x, I know summation of f of y. Now I will erase this because I don't require this diagram now. So I will draw a separate diagram. Summation of f of x is a positive, so it will be in this way. It is a 3.66 Newton. Summation of f of x is a positive. So direction I have given 3.66 Newton, and summation of f of y is a negative. So this should be downward arrow. I have represented negative sign by arrow, so it will be 72.13 Newton. I have not written here negative. The reason behind that, I have shown negative sign with the help of a direction. Clear? Now the joining line should be
resultant. This is a resultant. Joining line should be a resultant. Now I know a formula to find out resultant. R is equal to root of summation of f of x square means 3.66 square plus summation of f of y square means 72.13 square. Not minus 72.13. It is a plus 72.13. Clear? If you will take a square of that minus 72.13, again it will become positive. It's no issue. But why to consider that? Because already negative sign we have considered in arrow. Okay, so what is the value of R? 72.22. 72.22. 72.5. Okay, 72.22 22. Newton. 72.22 Newton. So this is answer. 72.22 Newton. Now, how to find out theta? This is a theta. So tan theta is equal to 72.13 divided by 3.66. So you are going to get theta here. Find out this answer. 87.09. 87.09. Okay, 87.09 Newton. Sorry, Newton, not degree. It is not a force. It is a angle. 87.09 degree. So in this way, we have completed this problem. In this way, we have completed this numerical. Anyone is having any issue related to this numerical? If not, I will erase this. ज्यांनी कोणी लिहून घेतलेलं नाही त्याने आन्सर लिहून घ्या. थीटा इज 87.09 and R is 72.22 न्यूटन. सर रिजल्टेंट का साइन क्या होगा सर? रिजल्टेंट का साइन पॉजिटिव होगा ना. ऑब्वियसली ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा. इधर मैं माइनस साइन नहीं लूंगा क्योंकि माइनस का एरो दिखा है ना इधर. उधर माइनस आया था लेकिन मैंने इधर माइनस नहीं लिया. रीजन मैंने एरो से दिखाया ना. ये एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन. तो इधर 72.13 3.66 स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा ना. Is it correct or any issue again? साकिब? सर ये तो खाली मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना सर, वो रिजल्टेंट वाला. डायरेक्शन का तो इसके साथ कुछ भी नहीं. डायरेक्शन तो ये थीटा दिखाएगा ना आपको. ऑलरेडी हमने डायरेक्शन दिखाया है ना इधर. देख लीजिए. हाँ सर, किस एक्सिस से? हाँ, रेफरेंस कहाँ से लेंगे सर थीटा की? थीटा हॉरिजॉन्टल से ना. देख लीजिए हमारी रेगुलर प्रोसीजर क्या रहती है. पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उसको एरो दिखाओ. एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा सर हमें थीटा के लिए. नहीं वैसा नहीं रहता. देख लीजिए कोई भी फोर्स होगा तो हम क्या करते हैं. देख लीजिए सपोज दिस इज अ 15 न्यूटन फोर्स इज है. ये रिजल्टेंट किसका है? हॉरिजॉन्टल का एक एंड वर्टिकल. और एम क्या है कि दो आरो मिलने चाहिए इधर. हम इसको रिजॉल्व करते वक्त कैसा किया था आप देख लीजिए ना. 15 न्यूटन था, हमको ट्रायंगल बनाना था तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. लेकिन एरो दिखाते वक्त आप चेक कर लीजिएगा, एरो शुड बी इन फ्लो. मैंने बोला था एरो शुड बी इन फ्लो एंड द सेकंड कंडीशन एरो शुड रिक्वायर टू एंड एरो शुड रिक्वायर टू मीट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. तो इधर मेरे को एफएक्स मेरे को इधर ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स मेरे को पता नहीं था, वाई मेरे को पता नहीं था. अभी इस केस में मैंने रिवर्स किया. मेरे को एक्स पता है, वाई पता है. तो मैंने क्या किया देख लीजिएगा. और एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक्स मेरे को पता है पॉजिटिव है, तो एक्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी. am I right? हाँ सर. एंड वाई निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए.
and हाँ, I sir. have to consider from this place only, no? The arrow should be in flow. Arrow should be in flow. No. अभी क्लोजिंग जो साइड रहती है वो क्लोजिंग साइड का एरो किधर आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए. Am I right or wrong? हाँ सर. क्लोजिंग का एरो ऐसा ही आना चाहिए. अभी इसका मेरे को हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है वो फाइंड आउट करना है. सो दैट इज अ थीटा. So this is a summation of f of x and this is a summation of f of y and this is a resultant. Resultant का and vertical का arrow meet होनी चाहिए. They should be meet to each other. This arrow should require to meet. Clear? Okay, okay sir. Okay. Okay. Anyone is having any issue again? So इसका resultant का direction मेरे को मिल रहा है. This is the arrow represents a direction. Remember that. Arrow represents a direction. Clear? So in this way we have completed this problem also. So those who have not completed this problem, please take the answer and afterwards you find out this answer. Okay, now I will give a second example to you. One triangle is there. $100 Newton, $200 Newton. 100 Newton. Is it feasible? So again, 100 Newton, 200 Newton. $50 Newton. $40 Newton. Now find out the answer of this now. How many forces? 4 forces. 50 Newton inclined 30 degree to the horizontal. 200 Newton is a completely vertical downward. 100 Newton positive horizontal and 40 Newton. You can cross check the answer. How much will be the angle of this? With horizontal, how much will be the angle? 60. Correct. 60 degree. Opposite angle. It is the opposite angle, so it is also 60 degree. Now do the resolution. Same procedure. Same method. Do the resolution now. Do the resolution. Minus 40 cos 60 minus 40 sin 60 minus 50
cos 30 minus 50 cos 30 minus 50 sin 30. Afterward, just you are required to do the summation of f of x and summation of f of y. $36.6, sir. Okay, Yes. I will just do this. Arrow should be moving outward. Minus 40 cos 60. Arrow should be moving outward. Minus 40 sin 60. Similarly here, arrow should be in this way. See here, arrow. All the arrows should be moving outward. All the arrows should be moving inward. All the arrows. Horizontal, 50 Newton, and vertical. So here minus 50 cos 30 and minus 50 sin 30. Okay. Now do calculation. Summation of f of x is equal to. 36.69. Okay, I will check 100. Then minus 40 cos 60. Then minus 50 Cos 30. cos 30. So how much it is? 36.69. 36.6. Minus 36, no? Yeah, 36. 36, sir. Okay, 36.69 .6. 69. न्यूटन. Okay, summation of f of y check कर लीजिएगा. Minus 259. Okay, Minus minus 259. Fine. minus 200. I will write all this. Minus 200 Newton. Minus 40 sin 60. And minus 50 sin 30. Minus 50 sin 30. So how much it is? Minus 259.64. 259, na? 0.64. Okay, 0.64 Newton. Please check the cross check the answer. Please cross check your answer. Now I will erase this. I don't require this now. मेरे को इसकी जरूरत नहीं है अभी. So I will erase this all this part. Now summation of f of x is a positive. So I have shown this arrow by due to a positive. Positive है इसलिए इस दिशा से arrow आ रहा है. This is a 36.69. Summation of f of y negative है. So arrow should be downward. ये 259 है. Positive मैंने लिया 259.64. And closing side and arrow. Closing side and arrow. This is the resultant. And this is the angle of resultant. This is a resultant and this is theta is the angle of a resultant. Now find out the R, same formula. What is the value of R? 262.21. 266 na? 0.21 Newton. Correct? 266.21 Newton. Nice, sir.
मग 2 262.21 sir. हाँ 262 है क्या? ओके ओके 262 262.21 21 न्यूटन ओके एंड थीटा 81.94 81.94 correct. Okay, so in this way we have completed this numerical also. Any doubt related to this numerical? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर थीटा की व्हॅल्यू किती? 81.94 81.94 येत नाही का? येते सर येत आहे सर. Okay. So 81.94 is the correct answer. So this is the theta. I will give this example for homework also because we have only a 6 minute left now. Okay, 4 forces, circular disc is there, 140 Newton, 35-degree angle, 100 Newton upward, 40 Newton completely horizontal, 60 Newton making angle with horizontal 60 degree to horizontal 60 degree, and another one force I will draw here. $30 Newton making angle 10 degree with horizontal. So in this way, 5 forces are there. In this way, 5 forces are there on a disc. Disc के 5 forces है 40 Newton, 60 Newton, 30 Newton, 100 Newton and 140 Newton. क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? हेलो साकिब. यस सर. कुछ ऐसे फिगर्स है क्या जो दिख नहीं रहे और ब्लर दिख रही है? ऐसा कुछ नहीं है ना? नो सर. Okay, so 5 forces are there. Do resolution and complete this problem. Now हमारी जो चैप्टर टेस्ट है वो चैप्टर टेस्ट सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एमसीक्यू टाइप चैप्टर टेस्ट रहेगी और वो टेस्ट वेंसडे को होगी. वेंसडे फ्रॉम आफ्टर कॉलेज आई एम गोइंग टू गिव दिस टेस्ट टू यू. मैं एक लिंक भेज दूंगा, वो उस लिंक पे जाके आपको क्या करना है, खाली आंसर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर. मैं खाली येत्या बुधवारी. हाँ, कमिंग टू वेंसडे. तुम्हारी इज हॉलीडे क्योंकि संडे को कॉलेज लिया इसलिए ट्यूसडे को छुट्टी दिए हैं. सो ऑन वेंसडे आवर टेस्ट विल बी देयर. ऑलरेडी आई हैव चेक्ड योर प्रीवियस पेपर. उस पेपर के आंसर्स भी मैं आपको बाद में बता दूंगा. वो सभी के आंसर्स है मेरे पास, सभी के क्वेश्चन के, कोई कौन गलत है कौन सही है वो मेरे पास सब कुछ है अभी. बट द एमसीक्यू टाइप टेस्ट विल बी ऑन
वेंसडे एमसीक्यू होगा, उधर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगा, मैं खाली आंसर पूछूंगा। थेरोटिकल पार्ट विल नॉट बी देयर, एक दो क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रॉइड एंड सीजी में डिफरेंस क्या है, उस टाइप का, और ऑलरेडी मैंने बताया है वो। एम आई राइट? सो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन टाइप, तो वो होगा। उसके बाद मैं 2-3 न्यूमेरिकल पूछूंगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल में सेंट्रॉइड पूछूंगा, कुछ एग्जांपल में मैं सेंट्रॉइड दे दूंगा आपको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एक वैल्यू में पूछूंगा, और बाकी के 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर्मूला पर। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल का BH³ डिवाइडेड बाय 36, HB³ डिवाइडेड बाय 36, इन दिस वे। So MCQ type test 20 mark MCQ test will be there. If I asked moment of inertia, that question will be for 4 marks. One MCQ will be for 4 marks. If I asked say moment of inertia, and if I asked centroid, then this question will be for 2 marks. And only one inertia, IXX और IYY. इसमें से एक पूछूंगा मैं, दोनों पूछूंगा नहीं अभी। Clear? So please prepare for that. सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरा थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, एंड स्टडी होने के बाद ही मीन्स टुमारो यू आर हैविंग सम टाइम, इन दैट टाइम यू जस्ट डू whatever the problems which we have solved, that problem repeatedly you solve it, then and then you will get a marks, otherwise you are not going to get marks, क्योंकि इधर कॉपी पेस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके कॉपी करके इधर पेस्ट करके ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि whatever the questions I am going to ask, that questions are different than the questions which I have asked in the means which I have explained in your notebook. Notebook में जो question है वो तो नहीं पूछूंगा मैं। So you are required to do the study, and that marks will be counted in final exam. Remember this, chapter test के mark count हो जाते हैं, and ISC के mark भी। So you are required to do the study. Now last minute left now. So you कितने एमसीक्यू है सर? एमसीक्यू में अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन जो भी एमसीक्यू पूछा हूँ, दो एमसीक्यू तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, 2-3 एमसीक्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे रहेंगे। सर मार्क्स कितने होंगे उसके? 20। ओके टोटल मार्क विल बी 20, और बाकी का स्प्लिटिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं बनाया, लेकिन आज शाम या कल तक मैं बना दूंगा, परसों टेस्ट है। ओके सर। Okay, now I think so time is over. We'll stop here and solve this problem. In next lecture, I am going to ask answer of this question. Summation of what is the summation of f of x, summation of f of y, r and resultant. Okay, thank you. We will have a lecture on Wednesday. So in that lecture, we will see you. Okay, thank you.